Very good evening, viewers. You're watching our COVID dispatch. We roll out of this very small village called Bhadras in Kanpur district. It's earned the infamy right now of being one of the villages which has recorded the maximum number of deaths in 15 days from 5th April till about 20th April. Things are right now slightly better is what we are being told. जो यहाँ की स्थिति है अभी विपिन, आप यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, यहाँ पर आप कह रहे थे 15 दिन में 20 मौतें हो चुकी हैं, उससे भी ऊपर 20 दिन में लमसम 20 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। 20 दिन में 20 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं यहाँ पर। और ये यहाँ की स्थिति नहीं है, ये हर जगह की स्थिति है। कोविड है या नहीं ये कोई पक्का नहीं है, क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ है। टेस्ट नहीं हुआ। दूसरी बात, अधिकतर मौतें 55+ हुई हैं। पहले से कुछ बीमारियां थी, ऑक्सीजन लेवल एक गिरा है, व्यक्ति का गिरा है, हाँ, और संभलने का मौका नहीं मिला और डेथ हो गई एक मतलब बगैर पहचान की। तो सारी अनअकाउंटेड माने या अनअकाउंटेड डेथ होंगी। कोई उसके लिए ये कह सकता है कोविड से ही हुई है, क्योंकि जांच नहीं हुई है और व्यवस्था भी नहीं रही है। 55+ थे, लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, हवा उड़ाई कोविड, क्योंकि कोविड इस क्षेत्र में तेजी से पैर पसारा था। पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद एकाएक कोविड लहर आई, 55+ तेजी से कम होने लगे, मतलब दिक्कतें बढ़ने लगी। सांस की प्रॉब्लम थी सभी को, जितने भी 55+ थे अधेड़ उम्र के, सबको जो भी कुछ बीमारियां उनके घर के अंदर हैं अगर, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हुई। स्वस्थ मनुष्य नहीं, जिनको अंदर कुछ बीमारियां थी उनको कोविड ने पकड़ लिया, पर सस्पेक्ट कोविड है क्योंकि जांच नहीं हुई। जांच नहीं हुई इसका। All right, so this is the situation here, viewers, in Kanpur. Every death that you go into a village, most deaths actually, not every, that be unfair, most deaths are suspect COVID. Suspect because there has been, there has been no tests here. COVID because most of them have died by, portraying, giving up symptoms of classic COVID. Let me move on right now, just about 100 kilometers from here. We were in the Etawah district. The biggest government hospital there of Etawah is the Ambedkar Hospital. Because when we walked in there, it's one of the stories that I have done in my life. The 2 hours that I spent there were hell. One of the most difficult stories to document, because we walked into a ward which was to be a COVID ward and we did not see any doctor. Worse off, viewers, what we did see was, not to be polite anymore, human shit everywhere, because all the bathrooms there were locked. Take a look at this ground report. The virus now is in the village, in the small towns, stalking its people. District-wise mapping of new corona cases show COVID has spread to India's hinterland. Seeing a green screen turn orange is easier than seeing its actual import. And with it, see a healthcare system collapse, which was hardly functioning in the first place. Uttar Pradesh's Etawah district has been reeling under a massive COVID surge, largely rural. Most turn positive in the villages. By the time they make it to the city, they are, what medical parlance suggests, serious. Most are brought to the biggest district hospital here, the Ambedkar Hospital. The 100-bedded COVID ward here is free for all. There is no isolation, no security, just no one from the authorities. Especially, there are no doctors. And horrifying still, there are no bathrooms. All have been locked. The mounds of garbage might have been removed, but all the bathrooms still remain locked. There has been no doctor that has taken the rounds since yesterday. And this is the condition right outside the wards, where 100 patients from this ward continue to defecate openly. एक तो ग्रामीण लोगों के लिए दवा प्रोवाइड कराएं, दूसरा उनको जो टॉयलेट बाथरूम है वो प्रोवाइड कराएं। कहाँ स्वच्छ भारत है, चारों तरफ पॉटियां पड़ी हैं, गंदगी है, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा। लेडीजें कहाँ जाएं, कहाँ बैठे, आप बताओ। आपने सब लॉक कर रखे हैं, आप जाओगे नहीं, एक ग्रामीण क्षेत्र से आया, उसको नहीं पता कैसे दवा कब देनी है, ये पकड़ो खिला देना, ऐसे नहीं होता।
8 दिन से पोछा नहीं लगा। झाड़ू लगती है बिल्कुल साइड से, वो भी बेड के नीचे पोछा, वो झाड़ू भी नहीं लगती है। वो भी आप पैर से ऐसे बोलती हैं कि सामान ऐसे निकाल के बाहर दीजिए। और कहाँ जा रहे हैं? वहीं आसपास बाहर निकल के, जहाँ नल है, हम लोग जहाँ जाके क्लीनिंग करते हैं, बर्तनों की हैंड वॉश करते हैं, वहाँ पे गंद पड़ी है चारों तरफ। वहाँ पे लोग टॉयलेट जा रहे हैं? टॉयलेट जा रहे हैं, पॉटियां कर रहे हैं ऐसे नालियों में बैठ के। कहाँ जाएं? कह रहे थे यहाँ पर बीपी का मशीन नहीं है। बीपी का मशीन नहीं पूरे है अस्पताल में बीपी का मशीन नहीं है। मशीन। मुझे तो यही बोला गया कि यहाँ पे बीपी का मशीन नहीं है, क्योंकि मेरी माँ बीपी के पेशेंट हैं। तो मैंने उनको कल परसों बोला भी था कि मुझे बीपी की उनकी दवाई देनी रहती है। तो मैंने और डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक बार बीपी आप चेक करा के उनको दवाई दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी ओवरडोज दवाइयाँ हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने पता किया तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ बीपी की मशीन नहीं है। We could walk in easily. No one stopped us. This was a COVID ward. We could see only attendants in charge. All bathrooms were locked. Mounds of garbage was lying inside the wards. Not a doctor in sight, but too many angry attendants. डॉक्टर आते, एक आध बार आते, अपना राउंड लिया चले गए। उनके डॉक्टर का सूद है? राउंड का काम है, राउंड का काम है। देखते कोई नहीं। कह रहे इंजेक्शन जब 20 बार का हो तब लगाने आते हैं डॉक्टर। वो भी कह देते 8 बजे का टाइम है, 8 बजे आऊंगा, और बीच में कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ। ब्रीथ ज्यादा चल रहा है, लेट जाओ, ठोको, 88 है, घर ले जाओ, ठीक हो गया है। अरे उसको समझाओ कि घर जाके करना क्या है। घर तो जाए, बेड हम खाली कर देंगे, किसको पड़ा यहाँ पे लेटने को। एटलीस्ट उसको समझाओ आप कि आप ये दवा इतने दिन खिलानी है, घर जाके ये एक्सरसाइज करनी है, ये आप खाइए, इस तरीके से रखिए, डाइट कुछ भी खिलाओ। अभी एक आध बार जब बोला है तो आ जाते हैं, नहीं तो अपने मन से कोई देखने नहीं आया। बस मैंने रिपोर्ट दिखाई है तो उन्होंने दवाई बता दी, ये खिलाओ पिलाओ। आपको बता दिया? हाँ, तो हम वही लेके जा रहे हैं। और जब दवाई लगाने के लिए बोलते हैं तो वो बोल देता उसके पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, वो कहता उनके पास जाओ। कोई मतलब ये नहीं है, जिम्मेदारी किसी को, कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने ऊपर। किसी के पास जाओ वो बोलेगा इनके पास जाओ, उनके पास जाओ वो बोल देगा उनके पास जाओ। डॉक्टर से कहो जाके तो बोल रहे अभी आ रहा है। वो जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है वो भी खोलने के लिए बंदा नहीं जाता है। सब लोग अपने अपने रेंच और पाना ला रहे हैं, उनसे खोल रहे हैं। अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ला रहे हैं? वो सिलेंडर नहीं, रेंच खोलने के लिए वो अपने हाथ से खोलते हैं। तो अभी आपने भटाके की आवाज भी सुनी होगी थोड़ी देर पहले। वो इसी कारण से हुई है, क्योंकि वो अपने आप से कहीं कम खुल रहा है, कहीं ज्यादा खुल जा रहा है, जानते हैं नहीं अब। और उनसे बोलने आओ तो उनकी 8 बजे ड्यूटी खत्म होने वाली होगी, 10 मिनट पहले ही खत्म। बुलाने जाओगे तो आएंगे नहीं, सिलेंडर जब तक खत्म हो जाएगा, जब तक मरीज खत्म। One of the guards did tell us that the sanitation staff has refused to work in the COVID wards. So there was no choice but to lock up the bathrooms. कोविड पेशेंट है, अरे वो तो कोविड वार्ड ही है ना, तो आप हमको प्रोवाइड कराइए ना। वहाँ पे कोई बाथरूम नहीं खुला है। हमारे हस्बैंड आज 4th डे में अर्ली मॉर्निंग उठे, कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे, 3 दिन से तो हिले ही नहीं बेड से, कहाँ जाऊं। तो फिर आज मैंने कहा अब उठो, तो 2:30 बजे रात में वहीं होके आए हैं जो वहाँ पे सिस्टम चल रहा है। क्या करें, कहाँ पर जाएं? कहाँ जाते हैं लोग? ऐसे खुले में करवाते हैं। खुले में करवाते हैं। लैट्रिन कोई चालू नहीं है पूरी बिल्डिंग में, कोई भी लैट्रिन खुला नहीं है। लैट्रिन बाथरूम कोई है ही नहीं है। कहाँ जाते हैं? ऐसे ही खुले में ऐसे ही ले जाते पेशेंट को अपना किसी तरह से। आप लोग अपना पेशेंट को खुद लेके जाते? खुद ही लेके जाते, मजबूरी है, क्या करें, कहीं ना ले जाओ तो या खुद साफ करो लैट्रिन अपने हाथ से। कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्या करें, मजबूर है आदमी। लैट्रिन बाथरूम यहाँ सामने ये बने हैं, इनके पीछे आड़ में कराओ जाके, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। We were there for about 2 hours. We did not see anyone come from the administration or even a doctor. I'm yet to see something like this. This is a COVID ward. It's supposed to be a high security protected COVID ward in Etawah. I have walked right in. People are lying right here. This is the entrance. There's no restroom. There is no bathroom for any of them to actually go. They are defecating outside wherever they find space. There is no doctor. I have now looked for at least 20 minutes here. There is no doctor. There are no nurses. They are each to their own. Attendants are the ones who are managing the patients.
We did try to reach the district authorities. After no response for a few hours, we can now report that the Uttar Pradesh police has now taken cognizance and promised action. However, while we go on air with this story, till now, nothing much has changed at the COVID wards of the Bhimrao Ambedkar Hospital. All that has been done is the mounds of garbage has been removed. But this is the current situation. Welcome back, viewers. There's one thing that we've heard a lot is that there's been an acute shortage of ventilators across the country, not a state, not one state run by a particular leader, throughout the country, shortage of ventilators. So it did break your heart a little bit when you saw hundreds of ventilators lying in various government hospitals across the country on various states, unused, bought under the COVID fund and given to government hospitals. 114 ventilators have been gathering dust at the Firozabad Medical College, unused till now, while the country was fighting to breathe. It is a time when hospitals are facing an acute crisis due to insufficient numbers of ventilators to treat COVID patients. Ironically, it is also a time when many of the ventilators supplied to the government hospitals under the PM Care Fund have been lying idle. It's for over a year now at the Firozabad Medical College. 114 ventilators have been gathering dust while India struggles to breathe. After news broke of the inefficiency on resource allocation, they have now been sent to different hospitals. Some have gone to a cancer hospital, some now being taken by the army hospital. ये इस्तेमाल में आ रहे थे जो हमारे ऊपर कोविड सेक्शन में और सारी वार्ड में, ILI वार्ड में, MICU में थे, वो कार्यरत थे। कुछ वेंटिलेटर हमारे पास एक्स्ट्रा थे जिसके लिए हमने पिछले साल गवर्नमेंट को लिख दिया था कि अगर कहीं जरूरत हो तो वहाँ हम दे सकते हैं। कितने एक्स्ट्रा थे? हमने 50 के लिए लिखा था और अब हमने, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एक आपने 50 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा था? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को? हमने तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट को लिखेंगे। या आपके पास एक्स्ट्रा आ गए थे? हाँ, हमने ये लिखा था कि अगर कहीं आवश्यकता होगी तो हम दे सकते हैं, क्योंकि उस समय जब आए थे तब लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा आपदा आएगी, कितने जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर ये लगा कि इतनी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जी, समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को जरूरत नहीं थी पर जैसे और प्रदेशों को तो बहुत जरूरत थी। नहीं तो अब देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता ना कहाँ पे जरूरत थी कहाँ नहीं थी। मेरे पास थे, मैं इस्तेमाल कर रहा था, अब मुझसे कहा गया भेज दीजिए, मैंने भिजवा दिए। तो ये 75 अभी तक यूज नहीं हुए हैं जो गए हैं? देखिए, ये अभी आदेशों का पालन करना हमारी मजबूरी होता है, पर ये यूज नहीं हुए हैं, ये वैसे के वैसे हैं, ये अभी तक यूज नहीं किए गए हैं। ये कैलिब्रेशन करके हम लोग देखते रहते हैं, बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं है। ये PM केयर के फंड के अंदर यहाँ पर आए थे और तब से 114 थे, आप कितने अभी भेज रहे हैं वापस? अभी हमने, जैसा कि आपने देखा, आर्मी हॉस्पिटल आगरा को कमिश्नर साहब के आदेश से 10 वेंटिलेटर अभी हमने दिए हैं, वो लोग लेके जा रहे हैं। बाकी प्रयागराज की गाड़ी खड़ी है, उसमें भी लद रहे हैं, उसमें लगभग 15 जाएंगे और 50 हमारे लगभग गए हैं कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में, मैडम ने दिए हैं। तो आपके पास के आदेश पे मैडम ही इन सबको देती हैं। तो अभी आपने 75 वेंटिलेटर्स हैं जो यहाँ से भेज दिए हैं, पर इसको 1.5 साल लगा है भेजने में। देखिए, ऐसा है ना, हम अपनी इच्छा से तो नहीं भेज सकते। जब हमसे कहीं दिशा निर्देश आएंगे हमारे उच्च अधिकारियों के, तभी तो हम कहीं भेजेंगे, डिमांड आएगी। तो जब आपने चिट्ठी लिखी उसके बाद कोई एक्शन हुआ नहीं? अभी हुआ है? नहीं, उसके बाद में ही तो एक्शन हुआ है। ये तो 1.5 साल लग गया सर। नहीं तो बीच में तो आप समझिए कोरोना ठंडा ही पड़ गया था, बिल्कुल खत्म ही हो गया था, पेशेंट 0 हो गए थे सब जगह। तो उस समय तो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि थम गया है, रुक गया है, सारी नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई थी, लॉकडाउन हट गए थे, सब नॉर्मल जीवन जी रहे थे बीच में अपना। अभी आप सेकंड वेव आई है, तब फिर लोगों को एहसास हुआ है कि आवश्यकता है। अभी ये जो आपके में कितने यूज हैं? हमारे यहाँ इस समय लगभग 40 इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी यूज हो रहे हैं? हाँ। आपको शॉर्टेज नहीं? नहीं, हमारे यहाँ सही चल रहा है।
जो यहाँ पर ये सारे पीएम केयर फंड के नहीं, सारे पीएम केयर फंड के नहीं है, कुछ हमारे पास पहले के भी थे अपने। जो आपने अभी भेजे हैं सारे पीएम केयर फंड? हाँ, ये पीएम केयर फंड के भेजे हैं सारे जो 75 हैं। हाँ जी, ये पीएम केयर फंड के भेजे। सुनने में आया है कि ये ठीक से चलते नहीं है, ठीक से चल रहे हैं? देखिए, ये आपके सामने है, आर्मी वाले अपने आप चेक करके तब लेके जा रहे हैं और ये सब वर्किंग ऑर्डर में है। These are strange times for this country. In an acute shortage, we seem to have a problem of plenty. Reporting with camera person Hitesh Kumar, Preeti Chaudhary in Firozabad for India Today. You know, there's this colloquial word that that is used very often when you're in Uttar Pradesh, practically all of India, but in Uttar Pradesh you hear it very often. It's called Ram Bharose. Literally the villagers here are tiding this monstrous COVID wave, Ram Bharose viewers. And then they're turning to God in general, because the administrative setup has completely collapsed. This report filed by my colleague Ashutosh from Maharajganj. As COVID makes inroads in the rural parts of the country, villagers are struggling to cope. With no healthcare, no testing available, they're now seeking divine intervention. The villagers of Gondria in Maharajganj district of eastern Uttar Pradesh have begun a 9-day ritual. They're offering prayers to the Almighty to protect their village from coronavirus. When the pandemic has entered into rural India, when the whole hospitals are collapsing, health infrastructure has completely given up, there are no beds available in the hospitals, crisis of oxygen, it is now the faith as people are relying on. Here in Maharajganj district, these villagers, the women, are en route to offering prayer, and this is happening in village after village. And if you see, not just women, but also the men from these villages, outskirts of the village, offering prayer. Women and men from the remote village of Maharajganj make their way together. Pots filled with water and with flowers. They walk till the outskirts of the city twice a day when the sun rises and the sun sets. They then stand together and offer prayers to Goddess Durga, praying for protection. जैसे कोई आपत्ति आती है, भगवान को तो कोई देखा नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि शायद ये सब करने से कोरोना भाग जाए. Almost every single village has resorted to turning to the gods for help here. They believe it saved them also in the past. It's a huge gathering of people, but they ensure that they maintain social distancing. Masks, however, seems to be a personal choice, with many choosing not to wear their masks, ironically, while praying to rid their area of COVID. आपको लगता है कि आस्था विज्ञान से आगे बढ़ जाएगी? आस्था विज्ञान से आगे थोड़ी बढ़ेगी. विश्वास ही सबसे बड़ा चीज होता है. हम लोग को पूरा विश्वास है. ये जो महामारी में हम लोग माता रानी को जल देते हैं, इस हम लोग को पूरा विश्वास है. It is the faith that they believe they will be protected from this pandemic. However, the physical challenges and the duties that these people are bound to is required, be it wearing masks or maintaining social distancing and not stepping out of their home during the lockdown, which many are following, but many do not. Bringing you this ground report from Maharajganj in eastern Uttar Pradesh with Sanjay Kumar and Amitesh, this is Ashutosh Mishra for India Today. With that, it's a wrap on this dispatch of our COVID dispatch. We're going to continue traversing through the rural belt in Uttar Pradesh, reporting on a pandemic which now, viewers, has bridged the rural-urban divide. Thank you for joining us. My camera person Hitesh and I continue our journey onwards. Up next is Rahul Kanpur.